dot product or scalar product. Let's say we have two vectors, vector A and vector B. An angle between these two vectors is theta. Magnitude of first vector is A. Magnitude of second vector is B. Then A dot B, which is basically A into B into cos of theta. A into B into cos of theta. This thing is called dot product of vectors A and B. A, B cos theta. What is A? Magnitude of first vector. What is B? Magnitude of second vector. What is theta? Angle between the vectors. And remember, when we find angle between the vectors, we always join these two vectors with their tails like this. Not like this. Like this. Now, fundamentally, if you know this formula, then that is more than sufficient. You can solve anything as far as dot or scalar product is concerned. Now, magnitude, 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 and therefore this whole thing now has no directional sense. A is a vector. It has magnitude as well as direction. B is a vector. It has a magnitude. It has some direction. But A dot B, this whole thing has lost any directional sense. It doesn't have any directional sense. It's better to say like this. And the whole thing is what? A, B cos theta. समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल यूज करते हैं जो आप कंफर्टेबली फील कर पाए. W stands for work, and I hope you know that work is a scalar quantity. Work is a scalar quantity. And if you do not know how come work is a scalar quantity, then just go and see the first lecture of vectors. F is force, and you also know this, that force is a vector. Similarly, S, which is displacement. Displacement is also vector quantity. W, work, is a scalar quantity. Force is a vector, and therefore we are using this symbol. Displacement, it's also a vector. Now, if I write F dot S, which is basically magnitude of first vector, magnitude of second vector into cos of theta. Suppose we have a situation like this. We have an object
let's say mass of the object is m, and this object is being pulled by a force F, which makes an angle of theta with horizontal. And because of this force, this body moves in this direction and covers a displacement of s. Force F is pulling this body, is acting like this, and what happens, this force moves this body from this point to this point, thereby creating a displacement of what? S. Then this number F into S cos theta is nothing but F dot S, and in physics we define F into S cos theta as work. अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा. What is the meaning of cos? What is the meaning of dot? क्या चीज है ये dot? 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी. अभी के लिए, if somebody gives you F dot S, then math says magnitude of this vector, cos of angle between these two vectors. Multiply these three things. Physics says F is force, S is displacement, then Fs cos theta according to physics is what? Work. Now let's understand meaning of cos theta. In this setup, if I ask you that this is the force F and it makes an angle of theta with horizontal like this, and I ask you to take components of this force, then this component is F cos theta. This component is F sin theta. F cos, F sin. Now if I ask you, this body is being pulled by this force F, which means basically there are two forces. One is F sin theta, which is acting vertically up like this. The other one is F cos theta, which is acting horizontally like this. Now, this displacement, if I ask you, is because of what? F sin or F cos? then what would you answer? एक वर्टिकल फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है. डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये डिस्प्लेसमेंट किस कंपोनेंट की वजह से हुआ? हमने बोला ये डिस्प्लेसमेंट किस कंपोनेंट की वजह से हुआ? एफ कॉस थीटा. नाउ 9th 10th तक आपको याद होगा आप वर्क को लिखा करते थे सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन 11th में आकर क्या चेंज आपको मालूम पड़ा वो देखना. जब मैंने आपसे यहां पूछा कि ये डिस्प्लेसमेंट इस पूरे के पूरे फोर्स F की वजह से है या फिर F cos थीटा, तो आप तुरंत बोलते कि सर F sin थीटा तो कुछ कर ही नहीं रहा है. जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? F cos थीटा. And therefore, work is not because of F, but is because of F cos theta. And because of F cos theta, how much displacement is there? हमने बोला displacement कितना है? S. This is the correct format of work. When you write like this, it gives us an idea that as if whole force F is into work and all, but ये फिगर साफ साफ बता रहा है कि F sin इसका कोई रोल नहीं है डिस्प्लेसमेंट में,
जो भी डिस्प्लेसमेंट है that is because of f cos theta, and therefore when you write work you should take that force which is producing this displacement. And what is that force? F cos theta. Now the moment you say W equals to F cos theta into S, हमने बोला कि भाई इस चीज को हम इस तरह से भी रीअरेंज कर सकते हैं, F into S into cos of theta. Then एक मैथ्स वाला बंदा आया, उसने हमसे क्या बोला कि भाई ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और इस फिगर में थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है. उसने बोला एक काम करो, इतना लेंथी फॉर्मेट मत बनाओ, उसकी जगह इस वर्क को शॉर्ट में क्या बोल दो, F डॉट S. होपफुली समझ में आया होगा डॉट प्रोडक्ट का मतलब. डॉट क्या करता है, F इंटू S किस तरह का प्रोडक्ट, डॉट. व्हाट डज इट मीन? आप दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन किस तरह से, जब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम. दोनों का डायरेक्शन सेम मींस F पूरा का पूरा नहीं, केवल वो फोर्स जो किसके डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में. इतना पार्ट नोट करिए. Now let's take some examples. If theta is less than 90, then cos theta is positive, and therefore A dot B dot product, it will be positive. If theta is 90, then you know that cos 90 is 0, and therefore A dot B dot product will be 0. If theta is greater than 90, then cos theta is negative, and that will give you A dot B as negative. If we are having acute angle between A and B, then your dot product is positive. Right angle 0, obtuse dot product will be what? Negative. पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके क्या मतलब है? जब हम वर्क पावर एनर्जी करेंगे तब ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी. अभी के लिए सपोज वर्क इज पॉजिटिव, इसका मतलब होता है कि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है. If A dot B is like F dot S and is what? Negative. That means work is negative. If work is negative, it means system की एनर्जी डिक्रीज हो रही है. क्यों डिक्रीज हो रही है? ये वर्क पावर एनर्जी उसमें डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इस सिस्टम की हेल्प से हम क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, अब उस पार्ट की तरफ चलते हैं. Look at this part especially. If theta is 90, then A dot B is what? 0. What does it tell us? Right here. I cap. What is I cap? Unit vector. What is I cap dot J cap?
What is I? X-axis. What is J? Y-axis. What is the angle between X and Y? 90. And if angle is 90, then you know that dot product is what? 0. And therefore I dot J or J dot I or I dot K. What is I? X. What is this? Y. What is the angle? 90. What is this? Z. K cap. What is the angle? 90. I dot K is equal to K dot I, which is equal to what? J dot K, which is equal to what? K dot J. All these combinations, angle between any two vectors is what? 90, and therefore this thing is always what? 0. In fact, any two mutually perpendicular vectors, their dot product is what? 0. लेकिन हम vectors को normally I और J से अच्छे से treat करते हैं, and therefore remember this part. Now let's talk about this. What is I cap? Dot I cap. X, X. But cap you know is what? Unit vector. And how do we take dot product? Magnitude of first vector, magnitude of second vector, angle between A and B, cos of that. Magnitude of first vector. What is I cap? Unit vector. Its magnitude is what? 1. Multiplied by magnitude of second vector. Its magnitude is what? 1. Multiplied by what? Angle between the vectors, which is what? 0. I hope you can see that if I say I dot I is this, then same is true if I say J dot J. That will also be 1 into cos of 0. J, that is J. This is also J. What is the angle between J and J? 0. Cos 0. Similarly, K dot K is what? 1 into cos of 0. And all these things are coming what? 1. 1. 1. What is I dot J? 0. So when you take dot product of two mutually perpendicular vectors, that is what? 0. And when you take dot product of two parallel vectors which are also unit vectors, remember, which are also unit vectors, then that dot product is what? 1. In fact, write down this as a statement. Dot product of any two parallel unit vectors is 1. Unit vectors. अगर vectors unit vectors नहीं है तब क्या होगा? यहां देखना. तो वो हमसे किसी ने बोला that find out A dot A. What is A dot A? Magnitude of first. Write down that. Magnitude of second. दोनों के बीच का angle cos of that. Cos 0 is 1 and you are getting what? A square. What is A dot A coming? A square. If vectors are not unit vectors, then dot product of two same vectors
dot product of two same vectors gives us what? Square of their magnitudes. Square of their magnitudes. और अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, then what is a? 1. And what is 1 square? 1. तो इसमें और इसमें कई बार लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? Once they see a dot a or b dot b, they always write 1. No, only if we are dealing with dot unit vectors. What about this? This is valid not because of this unit. This is coming 0 because angle between any these two vectors is what? 90, and cos 90 is making the whole thing what? 0. Hopefully समझ में आ गया होगा. इस चीज को हम थोड़ी देर बाद यूज भी करेंगे एक इस तरह के फॉर्मेट में जो आपने पहले से देखा हुआ है. इतना पार्ट नोट करना यहां पर पॉज करके. अब सपोज हमें किसी ने एक वेक्टर a, let's take this one or any vector for that matter, we have been given a as 3i cap plus 2j cap plus 5k cap. Let's say this is some random vector a, and similarly let's take another vector b which is 4i cap minus 3j cap plus 2k cap, and we need a dot b. दुनिया के सबसे इजी काम की अगर बात करेंगे तो यही कहलाएगा टेकिंग डॉट ऑफ समथिंग लाइक दिस a and b. कितना इजी है देखना उसको. When you take dot a dot b, you're multiplying this whole thing with this, and what basically you are doing, 3i cap multiplied by 4i cap. Multiplication should be of dot type. 3i cap multiplied by 4i cap, 3i cap multiplied by minus 3j cap, 3i cap multiplied by 2k cap. Hopefully समझ में आ रहा होगा क्या बोला मैंने. It's like this. Suppose somebody gave us a plus b multiplied by c plus d, and what we do? A multiplied by c plus a multiplied by d plus b multiplied by c plus b multiplied by d. Elementary maths. Now same thing is happening here. This multiplied by this multiplied by this multiplied by this. But now look at this part. Once you multiply I with j will get you what? 0. Similarly, when you multiply I with k will get you what? 0. Which means when you are multiplying this with this term, and this term, I with j and I with k, it becomes what? 0. And therefore we get what? 3 into 4, 12. And then what? I dot I. What is I dot I? What is I dot I? This is coming what? 1. And therefore when you multiply a with b using dot product technique, then what happens? ij 0, ik 0, I dot I 1, multiply the coefficient 3, 4, 12. अब a c के साथ हो गया, a d के साथ हो गया, b का नंबर है c के साथ, b का नंबर d के साथ, j. When you multiply j with I, j and I will get you what? 0. J and I will get you what? 0.
इधर देखने की जरूरत ही नहीं है। J and I, what is the angle? 90. डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0. J इस I के साथ क्या देगा? 0. J इस K के साथ क्या देगा? 0. J and K, what is the angle? 90. तो J इस I के साथ, J इस K के साथ, useless. J dot J, J dot J, J dot J is what? 1, and therefore you are multiplying what? 2 with minus 3. What is 2 minus 3? Minus 6. K cap. K with I, 0. K with J, 0. K with K, 1. Coefficients 5 to 10. तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ करेगा? अगर वेक्टर्स आपको आई जे के फॉर्मेट में दिया हुआ है, आपको वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लेना कितना आसान काम है। आई मल्टीप्लाइड बाय आई, कोएफिशिएंट 3 4 12। अब आई नहीं आना चाहिए। आई डॉट आई इज व्हाट? 1. जे विद जे, 2 minus 3 6. K with K, 5 to 12. This is coming 12 minus 6, 6 plus 10, which is what? 16. A dot B is coming a number. It doesn't have any I cap, J cap or K cap. If it doesn't have I cap, J cap and K cap, then this whole thing is what? A scalar number. And therefore, dot product is also called what? Scalar product. And in terms of I, J and K, कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट निकालना, ये भी आपको दिख रहा होगा कितना आसान है। Let's take one more example. A dot A, A dot A, this is A dot A, इसका इसी के साथ डॉट, इसका इसी के साथ डॉट, मतलब हमने क्या किया? हमने इस 3i cap, 2j cap, 5k cap इसके साथ let's write down the whole thing again. Let's write it down like this. Vector A, and what is that? 3i cap plus 2j cap plus 5k cap. And how do you take dot product? I with I. 3 into 3, that is 3 square, plus J with J, 2 into 2, 2 square, plus K with K, 5 into 5, 5 square, which is what? What is A dot A? What is A dot A? A square. This is what is A square. If this is A square, then what is A? If this whole thing is A square, then what is A? A is coming root over 3 square plus 2 square plus 5 square. और आपको पता है जब भी वेक्टर इस तरह से दिया जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई, स्क्वायर ऑफ दैट, कोएफिशिएंट ऑफ जे, स्क्वायर ऑफ दैट, कोएफिशिएंट ऑफ के, स्क्वायर ऑफ दैट। इतना आसान है डॉट प्रोडक्ट, कोई डरने वाली चीज नहीं। कहीं भी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज आपको मिले तो डॉट क्या बताता है अपने दिमाग में फिट करके रख लो फिर से। व्हेन यू से डॉट, इसका मतलब आप वेक्टर्स के उन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे जिनका डायरेक्शन क्या है? सेम। ए एंड बी, इस वेक्टर ए के पास देयर आर 3 पार्ट्स, x axis, y axis, z axis. B similarly has 3 components, one along the x axis, other one along y axis, and the last one along z axis. When you take dot, dot means you should multiply those parts which are in the same direction. X with x, y with y, and z with z. That's what dot product is. अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को फिजिक्स की लैंग्वेज में समझें, तुमने क्या समझा?
कि डॉट इज नथिंग बट वर्क. वन ऑफ द एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे डॉट चलते हैं अपने पास. वर्क, व्हाट इज वर्क? स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो आपने याद रखा था 9th 10th से. लेकिन यहां अगर 11th में अगर आपको क्या मालूम पड़ा कि पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल फोर्स का दैट कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इनफैक्ट उल्टा हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो पाया? उस कंपोनेंट की वजह से जो हमने देखा था. क्या था? F cos theta. And therefore we say that work is displacement multiplied by force in the direction of displacement. ये जो लास्ट लाइन है, परेशान मत होना, जब हम वर्क पावर एनर्जी करेंगे तब ये लाइन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको. अभी के लिए नोट डाउन एवरीथिंग. Now let's see cross product or vector product. When you multiply two vectors and product is also a vector, and that is called what? Vector product. When you multiply two vectors but product is a scalar, that was what? Scalar product. Now just to present them differently, we use this technique of dot and cross. When final product of two vectors is a scalar, we used to show that with the help of a dot. And when product of two vectors is another vector, then to show that we use cross, like this. These are the two vectors A and B. Angle between these two vectors is what? Theta. Then we say that A cross B is A magnitude of first vector multiplied by magnitude of second vector, sine of angle between these two vectors, sine theta. If I leave it at this stage, then it's not a vector. We are discussing what? Vector product. This is the magnitude portion. And you know that vector has a magnitude as well as direction. That direction part is given by eta cap. This is called eta. Alpha, beta, gamma, eta cap. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. n cap, k cap, j cap, जो आपकी मर्जी हो. लेकिन j cap, k cap मत यूज करना क्योंकि j and k स्पेशली फिक्स्ड हैं. इसके अलावा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. What is A cross B? AB sin theta multiplied by eta cap. This eta cap is a unit vector. यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है? डायरेक्शन देना. खुद का उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी में इस पोर्शन का मैग्नीट्यूड कितना है? 1. एंड देयरफॉर जो भी मैग्नीट्यूड है वो कहां से आएगा? AB sin theta. इसका काम क्या देना है? डायरेक्शन. What is that direction? Now note down that. Direction of A cross B. Direction of A cross B is always perpendicular to the plane of vector A and B. Direction of A cross B is always perpendicular to the plane of
वेक्टर ए एंड बी। क्या मतलब है इस पार्ट का, इधर देखना। दिस इज ए, दिस इज बी। ए और बी का प्लेन, look at the plane of this whiteboard. That's the plane of A and B. And what is the direction of A cross B? Perpendicular to this plane. This whiteboard से perpendicular क्या होगा? This. 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 This is the direction of what? A cross B. पूरा नहीं, अभी और समझ में आएगा। अभी के लिए this direction means this orientation. ये जो बोर्ड है, बोर्ड के प्लेन के अंदर कौन कौन है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. This is the direction of A cross B. Now there are two directions which are perpendicular to this board. One is this, which is pointing towards you, coming out of the board like this, and the other one going in, inward pointing vector, a vector which is going inside the board. Now how do you decide whether we are having a vector like this or a vector like this? That is decided with the help of right hand rule. Now write down this right hand rule. Curl right hand fingers curl right hand fingers from A to B, from A to B, from A to B, like this. This is the curling. This is the curling. Curl right hand fingers from A to B, then thumb points in the direction of A cross B. Curl right hand fingers from A to B, then thumb points in the direction of A cross B. समझना इधर, ये है A, दिस इज B। किसी ने पूछा A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या है, तो आपका दिमाग तुरंत क्या बोलेगा? या तो आउट थंब या फिर इन थंब. If I keep my thumb like this, then curling this fold is from B to A. But I am interested in what? A cross B. And therefore always remember, when you take cross product, how do you decide its direction? Thumb should be perpendicular to this plane, either like this or like this. And then this orientation is decided with the help of this sequence. If it is A cross B, then it should be read like this: A to B, with the help of what? Right hand, like this. And therefore, this eta cap, what is eta cap? Unit vector. किधर का unit vector? A cross B की तरफ का. कहाँ आ रहा है वो A cross B? Inwards. इसका मतलब हमारे इस सेटअप में जो A cross B का डायरेक्शन है, this is coming what? In. You know that inward pointing vectors are shown with the help of a cross. अगर वेक्टर आपकी तरफ आता है तो आपको वेक्टर की टिप दिखेगी, डॉट। अगर वेक्टर अंदर जाएगा तो आपको उस एरो के पीछे का क्रॉस दिखाई देगा। क्रॉस इज व्हाट? एन इनवर्ड पॉइंटिंग वेक्टर। And in our situation, this inward pointing vector is what? Eta cap. और हमें यहाँ पर
किस चीज का डायरेक्शन मिल गया है A क्रॉस B का डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B? इनवर्ड्स. इतना नोट करना, परेशान मत होना, ये पूरी चीज अभी थोड़ी देर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ना अगर किसी ने हमसे इस सेटअप के अंदर, लेट मी रीड्रॉ दिस होल थिंग, दैट्स योर A and this is B. This angle is theta. If somebody says that find out B cross A, if somebody says that find out B cross A, then pause the video, decide the direction of B cross A, and then come back. Now B cross A, B cross A जो भी होगा वो B और A का जो प्लेन है उससे 90, या तो बाहर या अंदर. It cannot be like this. Thumb should be perpendicular to the plane of these two vectors A and B. Then if it is B cross A, then I told you that you should curl right hand from B to A. B to A, you should curl your right hand like this. B to A. How do you curl that? How do you do that? B to A. Look, B to A. This is the curling. This curling is from B to A. And this curling says that thumb is pointing out, which means B cross A किस तरह का वेक्टर है? क्रॉस नो, क्योंकि क्रॉस तो गया था इन. इसका मतलब हमारे पास इस बार B क्रॉस A का डायरेक्शन क्या बनकर आया है? थंब आउट. If an arrow is pointing towards you, then you will see its tip. That's the tip. Tip means outward pointing vector. What is the direction of B cross A? It's an outward pointing vector. Now, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था तो हमने एक चीज नोटिस की थी, A डॉट B is AB cos theta. I can also write AB cos theta as BA cos theta. केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन है ही नहीं. And what is BA cos theta? BA cos theta can be written as B dot A, which gives us an easy result like this, that A dot B is same as B dot A. अल्टीमेटली आप किस चीज से बात कर रहे हो? स्केलर क्वांटिटीज. लेकिन यहां पर आना, अगर हमसे कोई पूछता कि व्हाट इज A क्रॉस B, तो हम बोलते A क्रॉस B इज व्हाट? A क्रॉस B इज व्हाट? इनवर्ड पॉइंटिंग वेक्टर. एंड व्हाट इज B क्रॉस A? Then B cross A is an outward pointing vector. Outward pointing vector. And therefore, if someone says that A cross B is equal to B cross A, then he is wrong. Why is wrong? When you equate two vectors, their magnitudes and their directions both should be same. You can see that directions of A cross B and B cross A, they are not same. One is in, the other one is out, and therefore A cross B is not B cross A. Remember this. But I hope you can see this. If I say that A cross B, what does it mean?
magnitude of A cross B is equal to magnitude of B cross A, then this thing is correct. How come this thing is correct? What is magnitude of A cross B? A into B into what? Sine theta. What is B cross A? B into A into what? Sine theta. We are not using eta cap. We are not using eta cap. We are interested only in what? Magnitude part. And therefore, A cross B, its magnitude is equal to what? B cross A. याद रखना है इस चीज को. अब यहां पर कुछ लोग क्या बेवकूफी करते हैं, उसको भी देख लो, उसको भी नोट करना. A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, उनका दिमाग ये चलता है, लो सर ये आ गया मैग्नीट्यूड, A स्क्वायर को हटा दिया, B स्क्वायर को हटा दिया. नहीं, यू डोंट डू दिस. वेक्टर से बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? A क्रॉस B. A cross B. First you will deal with A cross B. What is A cross B? A V sine theta eta cap between two vertical lines means find out magnitude of that A cross B. What is the magnitude? A V sine theta. And therefore A cross B, A V ये नहीं होता है. ऐसा नहीं कि आपने A का एरो हटा दिया, B का एरो हटा दिया. A cross B क्या होता है? A V दोनों वेक्टर्स के बीच का थीटा साइन ऑफ दैट. What is B cross A? Magnitude of B, magnitude of A, दोनों के बीच के एंगल थीटा का साइन, that is B A sin theta. Which gives us the next thing. What we found that A cross B, if is inwards, then B cross A is what? Outwards. That means A cross B is equal to minus of B cross A. It's an important result. याद रख. ये भी. What is A dot B? B dot A. What is A cross B? Minus of B cross A. What does it tell you? It tells you that A cross B and B cross A दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन A क्रॉस B का डायरेक्शन B क्रॉस A के डायरेक्शन का ऑपोजिट है. होपफुली समझ में आया होगा किस तरह से आप इस A क्रॉस B पार्ट को हैंडल कर सकते हो. नोट डाउन दिस मच. Now let's discuss cross product between I, J and K, these type of unit vectors. This is x-axis, which is I cap, y-axis, which is J cap, minus y, minus of J cap, minus of x, minus of I cap, z. नहीं, अब आप z इधर नहीं लिया करेंगे. z कहाँ होता है? x एंड y दोनों से 90 पर. x एंड y से 90 पर, लेकिन किधर? x एंड y से 90 दो होते हैं. this as well as this. तरीका क्या है? एक है राइट हैंड, x to y कर्ल कर दो. तो हम इस पॉइंटिंग आउट, तो अगर आपने x to y राइट हैंड कर्ल किया, then that right hand curl means thumb is pointing out. Out means dot. This dot is your z axis. बाहर की तरफ z. This z is called k cap.
out. Now, if this is x, then this is minus x. If this is z, then in is what? Minus z. And how do you show inwards? Like this. This is what? Minus z. Which means this is what? Minus of k cap. ये डायरेक्शनल सेंस याद रखना, इजी सा है. I, J and K is like this. I cap, J cap, this is your K cap. I, J, K. Now, क्या हमने इस चीज को डेवलप किया? यहां देखना. What was A cross B? A into B into sine of theta eta cap. Magnitude eta cap. Direction क्या है? पता है आपको. Now, if I ask you that find out I cross I cross I, तो फिर हमें किससे बात करनी पड़ती? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय साइन. दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, I and I, and therefore 0. What is sin 0? 0. ईटा कैप कोई मतलब ही नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है. इसीलिए इस तरह के जीरो को आप क्या बोलते हैं? नल वेक्टर. What do we call it? Null vector. I cross I. क्या है ये? क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट. तो जो प्रोडक्ट आया है, व्हाट इज दैट? अ वेक्टर. लेकिन अगर ये वेक्टर है, कहाँ है, किधर है? नो आइडिया. नो आइडिया. नल वेक्टर. Now, if I cross I is 0, I hope you can see that J cross J is also 0. K cross K is what? 0. In fact, A cross A is what? 0. किस वजह से? अगर आपके पास दो पैरेलल वेक्टर हैं, not necessarily of same magnitude. Let's discuss a situation like this. Let's say A cross B. Let's say A cross B. Like this. Say this is vector A and this is vector B. You can see that they are of different magnitudes, but they both are parallel. If they both are parallel, that means theta is what? 0. Your A cross B is what? 0. But what is sine theta? What is sine 0? 0. Or if you have vectors like this, vector A and vector B, what is the angle between these two vectors? Two vectors which are pointing in opposite directions. What is the angle between these two vectors? You will say that theta is what? 180. And what is sine 180? 0. And therefore, if we have two vectors which are parallel or anti-parallel, then the cross product is always 0. That is the generalized statement. Write down the statement. Cross product of two parallel or anti-parallel vectors is always 0. अब इसका जो स्पेशल पार्ट था यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में, ये हमारे को ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है. एंड therefore we'll remember this. I cross I 0, J cross J, K cross K.
अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, कभी डॉट और क्रॉस इनके फॉर्मूले मिक्स हो जाया करेंगे आपके दिमाग में, तो या तो थोड़ा प्रैक्टिस लेवल बढ़ाना तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, या फिर जो आपकी मर्जी हो वो करते रहना। हम यहां पर एक नई चीज देखेंगे। अब अगर आपसे पूछा गया होता आई क्रॉस जे, then pause the video and think about it. What does it mean, I cross J? And then come back and see the solution. Now, I cross J, A cross B, magnitude, sign, eta cap. दिमाग में सारी चीजें. I cap, magnitude is what? 1. J cap, magnitude is what? 1. Into sine of, what is the angle between I and J? 90. अब आ रहा है काम का पार्ट, I क्रॉस J, इसका डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड। कहां से कहां कर्ल होगा? I to J, I to J, thumb is pointing out like this, I J, thumb is pointing out. Outward is what? Eta cap, that unit vector which gives you the direction of A cross B. लेकिन जब आप बात कर रहे हैं I and J, then outward vector has a name, and that name is what? That name is what? K cap, and therefore यहां पर हमने उस डायरेक्शनल पार्ट को किस तरह से शो किया? K cap, magnitude sine of 90, K cap, which gives us what? Which gives us I cross J as what? K cap. And I hope you can see that J cross I, you know, is what? Minus of I cross J, and therefore is what? Minus of K cap. If I cross J is K, then J cross I is what? Minus K. कैसे? ऐसे। क्या लिखा है? J cross I. अगर J cross I है, then this means what? J to I, right hand curve. ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में फिट कर लेना। I cross J, I to J, right hand curve. J cross I, J to I, right hand curve. J to I. ये क्या था? I cross J. What is this? J to I. J to I, thumb is pointing what? Inwards. What is inwards? Minus K cap. Now, अगर हमसे बोला गया होता फाइंड आउट I क्रॉस K, तो देखना है इस चीज को, मैग्नीट्यूड 1 into sin 90, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, I and K दोनों के बीच के एंगल का साइन विच इज 90। नाउ कर्लिंग कहां से कहां? I cross K, I to K. Now do we take care of this curling? देखो भाई, that's all these three vectors, I, J, K, I, J, out is K. किससे बात हो रही है? I cross K, I cross K, which means I and K. तो इस बार ऐसे या ऐसे ये करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होता है? थंब कहां होना चाहिए? थंब कहां होना चाहिए? I and K ये जिस प्लेन में है उस प्लेन से 90 पर, I and K ये दोनों इस प्लेन में है, इस प्लेन से 90 या तो ये होगा या ये होगा। This is what? What is this? K cross I. K
क्रॉस आई, लेकिन मैंने क्या पूछा हुआ है, आई क्रॉस के. What is I cross K? Hold your thumb like this. I to K. I to K. This. That means I to K is pointing downwards like this. If this is J cap, then what is downwards? Minus J cap. And therefore, after the magnitude part, we use what? We use what? Unit vector. And this unit vector is minus of J cap. Finally, अपना क्या आंसर बनकर आ गया भाई? I cross K is coming what? Minus of J cap. आज में एक छोटी सी ट्रिक डेवलप करेंगे और इस ट्रिक से ये सारी वैल्यूज अपने को याद हो जाएंगी. लेकिन अभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, हम इस चीज को करते रहेंगे कि किस किस तरह से हम I cross K and all डेवलप कर रहे हैं. Once you got I cross K as minus J, K cross I, you know that will be minus of I cross K, which is minus of, what is I cross K? Minus of J, minus of J, minus minus plus, which is coming what? J K. सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? This is what K, this is what I. हमने क्या बोला? Where is K? That's your K. Where is I? This is your I. Now look at this. I, J, K. अगर कोई हमसे पूछता K क्रॉस I, तो हम सीधे सीधे क्या करते? K to I कर लें. K to I कर लें. Thumb is pointing what? Up, 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 up is what? J K. That's your J K. Then हमने क्या क्या देख लिया भाई? I cross J, I cross K, and now J cross K, J cross K. खुद चेक करना, ये आएगा आपका I कैप. क्या किया? खुद सोचना. I cap. J cross K is coming what? I cap. And therefore K cross J will get you what? Minus of I cap. काम का पार्ट क्या है? जब आप क्रॉस की बात करते हो तो सेम वेक्टर्स, parallel or anti-parallel, remember that, will always get you what? 0. And perpendicular किस तरह के यूनिट वेक्टर्स ऑफ टाइप I, J and K, इनके कॉम्बिनेशंस याद रखना. अब इन कॉम्बिनेशंस को याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है. Look at this trick. क्या ट्रिक है? Write down I cap, J cap and K cap, and then again repeat I, J and K. I, J, K, and then repeat I, J, K. अगर आप इस तरफ जाएंगे you will get positive number. अगर आप इस तरफ जाएंगे you will get a negative number. किस तरह से? I cross J, the next item, K cap. I cross J is what? K cap. J cross K, the next item, I cap. J cross K is the next item, I cap. K cross I, K cross I, K cross I, J cap. K cross I, J cap. And when you move in the opposite direction, K cross J, next number I, but you're moving left, and therefore K cross J will get you what? Minus I. K cross J will get you what? Minus of I. So अपना K cross J, look here, K cross J is what? Minus of I. So remember this trick part.
This thing is what? The trade. अब किसी भी सिचुएशन में जब आपको क्रॉस करना हो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो किस तरह से किया जाएगा? Let's take a simple example first and then we'll develop some complicated ones. हालांकि कुछ बहुत खतरनाक कभी हो ही नहीं सकता इसमें। तो वो अपने को दिया गया A is 2 I cap plus 3 J cap. Easy. B अपने को दिया 5 I cap minus 6 J cap. अगर डॉट होता सुपर इजी, आई विद आई जे विद जे कहानी खत्म हो गई होती। अगर किसी ने हमसे ए डॉट बी पूछा होता, दुनिया का सबसे आसान काम, आई विद आई 10, जे विद जे -18, दिस इज कमिंग व्हाट -8। लेकिन अपने से पूछा गया है क्रॉस। तो अभी आप प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स आप ये पूछा गया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस 5 आई कैप minus 6 j cap, which is what? 2 with this. Let's save some time. 2i with 5i. I cross i. What is I cross I? 0. Cross product of parallel or anti-parallel vectors is always what? 0. And for I cross I gets you what? 0. क्या बचा अपने पास? I with j. What is this? -12 coefficients. 2 into -6 -12. And then write down like this, I cross j. I with I 0 हो चुका है. I with this part gets you 2 into -6 and then I cross j. Then next number पर चलते हैं अब. J with this 3 into 5 15. J cross I. क्यों स्पेशली मैंने यहां पर इस तरह से पूरा ओपन करके दिखाया है? लोग क्या करते हैं, J क्रॉस I, उसको भी I क्रॉस J लिख देते हैं। नहीं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इट डज मैटर व्हेन वी डील विद क्रॉस प्रोडक्ट। इफ इट इज J क्रॉस I, then you must write J cross I only. If it is I cross J, then you must write I cross J. J cross I हो गया। Next, J cross J. J cross J, you know, is what? 0. तो हम किस चीज के साथ डील कर रहे हैं? -12 I cross J. I cross J. Next item, K cap. Plus 15 J cross I. J cross I. Next item, but in the opposite direction, and therefore minus K cap. -12 minus 15 is coming minus of 27 K cap. जो प्रोडक्ट आया is itself a vector and therefore cross product is called vector product. Hopefully समझ में आएगा किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हैंडल करते हैं. Or down everything.